Hello my dear students, good morning to all. In previous class we have studied latest practice 8.3. Now today we will study exercise. Okay. Now first question, write the fraction and fraction name for the shaded part. Here it is asked which part given here? Shaded. Fraction लिखना है हमें shaded part का. कभी कभी unshaded भी पूछ सकते हो. तो यहाँ shaded पूछा है. We have to write at first fraction for shaded part and after that fraction name also. So here which figure is given? Triangle. Okay. Now inside again two triangle get. Total how many equal parts? 1, 2. So write that 2 down. And among that 2 equal parts, how many parts were shaded? Only one part is shaded, right side. So the fraction will be 1 by 2. Fraction for shaded part is 1 by 2. So numerator is 1 and denominator, which number will be there? 2. Understood? And fraction name. 1 by 2 means how to write half, we can say that. Or 1 by 2 or 1 over 2 or half, simply half. H-A-L, yeah. Or 1 by 2 also we can say that one. What you want? Understood that one? Half. 1 by 2. 1 by 3 means 1/3 like that. So understood this example? If it is asked, write the fraction and fraction name for unshaded part, then at that time also you will get answer same only. Total equal part 2, among 2 unshaded part is 1. So 1 by 2 only. But here asked shaded part. Okay. So example number first from exercise, note down this one. First one I explained. Now second question, what it is given in, open your textbook, page number 309. Okay. Like that only, write the second question, same thing. Fraction and fraction name for the colored part. How many equal parts here? 1, 2, 3. So that 3 you have to write down. And among that 3, how many parts were shaded? 2. So what will be fraction name here? 2/3. Understood? Now fourth, 1, 2, 3. 3 equal parts, write 3 down. Among that 3, how many parts are shaded? 1. So 1 by 3. The fraction will be 1 by 3. So how to read 1 by 3? How to write in word? Only 1 dash third. 1/3. Understood? So second and third you have to try that one. Now fourth example I will explain. Fourth example, what it is given, look at. Write the fraction with numerator 1 and denominator is 6. Simple question. Numerator 1. So you have to write 1 as numerator and denominator what is that? 6. So the required fraction will be 1 by 6. So understood? Numerator always comes up above the line and denominator always be written below the line. Now next example number 5th. Write the fraction for each of the following. Here given 1/7. So 1 you have to write what? Up. 1 by what? 7th means 1 by 7. So understood? 1 by 7. 1 by 7 means 1/7. Sometimes it is given in word, you have to write in numeral. Sometimes it is given in numeral, you have to write in words also. So understood? So note down this fourth and fifth example. Now sixth example, look at. Suman had to do 20 sums for homework. She finished doing 10 sums. What fraction of her homework has she finished? Suman had to do 20 sums. यानी सुमन को 20 एग्जाम्पल्स करना था फॉर होमवर्क. उसको होमवर्क दिया गया. होमवर्क मतलब गृहपाठ, जो टीचर पढ़ाने के बाद कुछ एग्जाम्पल रहते थे, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए देते हैं, जैसे मैं देता हूं होमवर्क वैसा. सुमन हैड टू डू. सुमन के मैडम ने या सुमन के टीचर ने 20 सम्स दिए थे उसको करने के लिए. किसको? सुमन को. फिर शी फिनिश्ड. फिर वो क्या करेंगी? सुमन कंप्लीट करेंगी. कभी कभी बच्चे पूरा 20 के 20 एग्जाम्पल करते हैं, या फिर कभी उसमें से 10 कर रहे करते कुछ बच्चे 5 करते हैं, या कुछ बच्चे कुछ भी नहीं करते. लेकिन उसने शी फिनिश मतलब कंप्लीट किया. डूइंग 10 सम. उसने 20 में से कितने सम किए? 10, यानी आधे सम कर चुकी हो. फिर यहाँ पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर होमवर्क हैज शी फिनिश्ड. तो यहाँ हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन लिखना है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर होमवर्क हैज शी फिनिश्ड. फिनिश कितना किया है? 10. यानी टोटल सम कितने थे? 20 में से फिनिश कितने किए? 10. यानी उसका फ्रैक्शन क्या आएगा फिर? 10 by 20. 10 by 20. इतना लिखने की कोई जरूरत है, डायरेक्ट 10 by 20 भी आ सकता है. या फिर ये क्या है? 20 सम मतलब एग्जाम्पल. नंबर ऑफ सम सुमन हैड टू डू. कितने करना था? 20. ये देखिए नंबर ऑफ सम्स फिनिश का मतलब कंप्लीटेड बाय सुमन ने. कितना किया उसमें से? 20 में से 10. फिर फ्रैक्शन ऑफ होमवर्क फिनिश्ड बाय सुमन. तो क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ सम कितने थे? 20 में से कितने कर चुके हो? 10. तो ये आंसर हुआ. या फिर और वी कैन सॉल्व दिस वन. 10 by 20 means in two stable I am writing here up
Look that. Now, or we can say 10 by 20, or I am writing 10 by 20 means we can solve into lowest term. In 2's table we are getting 10, okay. In 2's table we are getting 20 also. So convert into lowest term. So 2 5s are 10, 2 10s are 20. If possible, then only we have to convert. 2 5s are 10 and 2 10s are 20. Okay, now these two to get cancelled. Now 5 by 10 left. Now this 5 by 10 again getting cancellation. In 2's table we are getting this 10 cancellation, but 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, यानी एक ही नंबर ढूंढना है हमें। ऊपर जो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड किए तो 0 आएगा वैसा, या फिर टेबल में आना चाहिए। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं। 5 के टेबल में 5 आएगा, लेकिन हाँ 5 3 के टेबल में नहीं आता ये दोनों नंबर, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में आता है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, मतलब 5 1s are 5, अब लिख सकते हैं 5 2s are 10। दिस 5 I get अगेन कैंसल, सो 1 by 2। इसका आंसर है 10 by 20, और ठीक है, मैं और यहाँ पर लिखा है ऊपर में, और 1 by 2, 10 by 20, और डायरेक्ट 10 के टेबल में आता है। 10 1s are 10, 10 2s are 20, ऐसा भी होता है। अगर आपको चाहिए तो लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, या फिर 10 by 20 इज आल्सो द करेक्ट आंसर। सो अंडरस्टूड? सो नोट डाउन फ्रॉम हियर टू आफ्टर दिस you have to write up also. Look that. Don't write this one first only. First you note down this example. Okay, up to here. After that, below this only you have to write this one. So note down this one. Now we will study multiple choice question. Multiple choice short form is YUM. Multiple mean YUM, C mean choice, and Q mean question. Multiple choice question we have to study. Now here first example, the numerator of the fraction. Here fraction is written 6 by 7 is. Here ask the numerator. What will be the numerator guys? 6 or 7? Numerator is always present above the line. So the numerator of the fraction is 6 will be there. 7 not possible. 7 is denominator. 6 will be the numerator. None of this. So which option is correct? Option number B means 6. So understood? So put right for B. Now second example, what fraction of our national flag is orange? National flag. Which is our national flag? Our national flag is Tiranga, and in Tiranga how many colors are there? 3 colors. Okay, 3 colors are there. So that is why it is called Tiranga. Okay. Now what fraction? Which color present? Up orange, in middle white color, and in down green color. So okay. So orange, white, and green, and in between that white color one Ashok Chakra also there. Okay. Tiranga means 3 colors: orange, again second one is white, and third one is green. So total color how much? How many? 3. So that 3 we have to write down. Now what fraction of our national flag is orange? Orange only one color, so 1 by 3rd. 1 by 3rd means which option? 1/3, 2/3 or 3/3. So which option we are getting here? 1/3. यानी 3 कलर में से ऑरेंज कलर कितना है? एक ही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर A, 1/3 is the correct option. Orange, white, and green. So here ask what fraction of our national flag is orange. So among that 3 colors, one color is orange. So 1/3. Understood? Now third example, look at the shaded part in the figure. This diagram is given. Shows the fraction. How many triangles? 1, 2, 3, 4. So total triangles are there 4. So count that. 1 equal 1, 2, 3, 4, or 1, 2, 3, 4. So 4. Among that here ask the shaded part in the figure. Shows shaded part how many? 1, 2, 3. So the required fraction will be 3 by 4. So here option given 1 by 4, B 2 by 3rd, or C 3 by 4. Which option we are getting here? C 3 by 4. So put right for C. So understood? So in this way we have to write the means put right for the correct option. This is called multiple choice question. So note down first, second, and third. Question number 4. Look at what it is given here. Nisha invited 8 girls to her birthday party, but only 3 of them came. What fraction of girls did not come to the party? निशा इन्वाइटेड यानी किसी को आमंत्रण देना। निशा ने कोई फंक्शन वगैरह है, जैसे हम दूसरे लोगों को बुलाते ना, हमारे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ठीक है। निशा इन्वाइटेड, निशा ने अपने 8 गर्ल्स को इन्वाइट किया। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं यहाँ? 8 टू हर बर्थडे पार्टी। क्या फंक्शन है निशा के घर में? निशा का बर्थडे है, यानी जन्मदिन है।
अपने जन्मदिन पर उसने अपने सहेलियों को 8 गर्ल्स को बुलाया, इनवाइट किया, ठीक है। लेकिन 8 में से कभी कभी जरूर नहीं कि जितने लोगों को बुलाए उतने लोग आएंगे करके, बट ओनली 3 ऑफ देम के, यानी 8 में से ओनली 3 के, यानी 8 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स आए, यानी टोटल कितने थे गर्ल्स 8 में से कितने आए सिर्फ 3, फिर कितने नहीं आए यहाँ पर 5 गर्ल्स नहीं आए। तो यहाँ पर पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स डिड नॉट कम टू द पार्टी, कितने गर्ल्स नहीं आए थे 5, ठीक है। टोटल गर्ल्स 8 में से कितने गर्ल्स नहीं आए यहाँ पर, डिड नॉट कम टू द पार्टी 3 आए, इसका मतलब 5 गर्ल्स नहीं आए ना, तो फिर फ्रैक्शन क्या रहेगा 5/8। सो व्हाट विच ऑप्शन गिवन हियर 5/3, B 3/8 और C 5/8। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट C। ओके, ये सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर डायरेक्ट समझना डायरेक्ट पुट करो उसमें। नंबर ऑफ गर्ल्स वही लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इनवाइटेड बाय, किसने इनवाइट किया था निशा ने, टू हर बर्थडे पार्टी इक्वल टू 8 गिवन। नंबर ऑफ गर्ल्स केम टू निशा's बर्थडे पार्टी 3, दैट आल्सो गिवन। नंबर ऑफ गर्ल्स डिड नॉट कम टू द पार्टी, फिर क्या करना पड़ेगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना होगा, फिर 8 में से 3 माइनस करो कितना आएगा यहाँ 5, ठीक है। फिर यहाँ पूछा है फ्रैक्शन ऑफ द गर्ल डिड नॉट कम टू द पार्टी, टोटल गर्ल्स कितने थे 8, ठीक है। टोटल गर्ल्स 8 में से कितने गर्ल्स नहीं आए वो फ्रैक्शन पूछा है, तो फिर कितने गर्ल्स नहीं आ रहे यहाँ 5। सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी 5/8, अंडरस्टूड। सो पुट राइट फॉर विच ऑप्शन C। Here write properly, this is 5/8। समझ में आया, या फिर इसको थोड़ा ऊपर ले लो, this is 5 and this one is 8, so 5/8 girls did not come to the party। So note down this one। Now multiple choice question, 5th one, last question। How many 1/4 make a whole? 1/4 it is given, make a whole, 1/4 into which number we have to find here, make a whole, whole means complete, 1/4, how to write 1/4, 1/4 into, here we don't know which number, whole means complete, means 1, entire 1. Now here you can take any number, any letter, 1/4 into, let 1/4 into, take here A. Now we are going to find the value of A, okay, equal to 1. Now 1, here nothing means below A you can write there 1, we can take that as 1, A/1 equal to 1. Now A by B into C by D. You know that this formula. If A by B into C by D, then what we have to do? A into C. A into C divided by B into D. In higher class, this in fraction lesson it is there. 1/4 is fraction. A by 1 is also fraction. If both number are in fraction, then we can write in this way. If A by B, A means 1, B means 4, C means A and D means 1. Then A into C means numerator multiplication divided by denominator multiplication. In the same way, 1 into A, now look, 1 into A divided by 4 into 1 equal to what it is there? 1. Now 1 into A or A into 1, A only. Okay. Now 4 ones are 4 equal to 1. Understood? Now we have to find the value of A. Okay. If below this 1 we can take again nothing means 1. Now here separate formula. Next formula, if A by B, if both fraction are equal, then C by D. If A by B equal to C by D, then we have to apply which formula? Which rule will get there? A into D, cross multiplication we have to do, equal to B into C. A into 1, A into 1 equal to 1 into 4, 1 into 4. Okay, A into 1, A. Now 1 into 4, 4 ones are 4. So what is the value of A? A we are getting here 4. So 1/4. How many 1/4 make a whole? So how many? 4. 1, 2 or 4. Which option is correct? 1/4 है ना, 1/4 में यहाँ सीधा है into dash equal to 1. तो यहाँ कौन सा नंबर लेना पड़ेगा हमें? 4. फिर 4 गेट कैंसल, 1 और 1 इक्वल हो जाएगा, इसलिए यहाँ 1/4 है तो डिनोमिनेटर में 4 है, 1/4. ओके,
इसलिए यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, 1, 2 और 4 ही लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा उसको सॉल्यूशन बताया मैंने, ठीक है। ए की वैल्यू आई 4, तो यहाँ पर 4 डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी देखो बताया ना 1/4 इंटू ए की वैल्यू पुट किए इक्वल टू 1, ये देखे था होल, मतलब 4 गेट कैंसिल, 1 इक्वल टू 1, फिर इक्वल हो जाएगी वैल्यू, इसलिए 1 4। ऑप्शन इज 1, A, B given 2 or C 4. So what answer we are getting here? 4. This fraction lesson is in higher class, maybe in 4th or 5th standard. So that some formula we have to keep in mind. Whenever cross is there, then multiplication, and if both fraction are equal, then we have to do cross multiplication. A into D equal to B into C. So understood this one? So note down. Now what left there? Fill in the blanks, true or false. That one, and value based question. Okay, that we will study in next period. Match the following also there. So up to here, note down it. Now today's homework, textbook page number 309 and 310. Exercise 1 to 5. Total 6 examples were given, but 1 to 5 only you have to complete. That from that, I think that first one over, I explained that one, this triangle. Now you have to write the fraction for this second and third. Make that diagram, circle, and third triangle also, and write the fraction for the shaded part. Fourth A already over, B you have to complete. Okay. Fifth in the same way, fifth A I completed, B you have to do. Sixth already over. Now in next period we will study fill in the blanks. Again what left, true and false, match the following, value based question. All that things we will study. So only few examples are there. You have to complete that one. So try to complete. Don't leave any question. Okay.